In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, 5 class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about the subject General Science, Chapter 6. Its topic is Light and Sound. Dear students, first of all we discuss about the learning outcomes of Chapter 6, Part 1. Identify natural and artificial sources of light. Justify that light emerges from a source and travels in a straight line. Investigate luminous and non-luminous objects. Identify and differentiate between transparent, opaque, and translucent objects. Investigate that light travels in a straight line. Explain the formation of shadows. Predict the location, size, and shape of a shadow from a light source relative to the position of objects. Demonstrate that shiny surfaces reflect light better than dull surfaces. Dear students, in this passage we discuss about the sunlight. The beauty and fascination of our universe is because of sunlight. हमारी जो दुनिया की खूबसूरती है, कायनात की खूबसूरती वो सनलाइट की वजह से है. Our life starts with the rising of the sun. We can see objects around us due to its light. कि हम सूरज की रोशनी में ही तमाम चीज़ों को देख सकते हैं. Sun and stars are the natural sources of light. कि sun और stars जो है वो natural sources of light हैं. All forms of life on earth are due to light of the sun. इस दुनिया में हम जो जिंदा रह रहे हैं, हमारी जो जिंदगी है वो सूरज की रोशनी की वजह से ही है. What would have been the situation without the sunlight? कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो हमारी क्या सिचुएशन होगी? Nothing, कि कुछ भी नहीं होगा. Including human beings, birds, animals, vegetation, flowers and fruits would have existed. कि तमाम चीज़ें सनलाइट की वजह से यूनिवर्स में मौजूद हैं और अगर सनलाइट नहीं होगी ये तमाम चीज़ें भी मौजूद नहीं होंगी. Sometimes electricity supply is disrupted at night. के बाद ऐसा होता है कि रात में अगर लाइट जो है वो चली जाए, ऑफ हो जाए, darkness spreads everywhere, तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है. Then we use artificial sources of light. तब हम artificial sources of light को use करते हैं. Can you name some of such sources of light? Can you name some of such sources of light? Torch, candle. These are the artificial sources of light. Do you know light is a form of energy? Plants prepare their food using sunlight. तो plant sunlight को use करते हुए अपनी खुराक तैयार करते हैं. Interesting information. Speed of light is the fastest in this universe. Light travels 300,000 kilometers in 1 second in air or vacuum. Activity 6.1. Some light sources are given below. Pick the natural sources of light. Candle. Candle is the artificial sources of light. Sunlight is the natural sources of light. Stars is the natural source of light. Bulb is the artificial source of light. Lightning is the natural source of light. Firefly is the natural source of light. Dear students, now we discuss about luminous and non-luminous objects. The objects which emit light are called luminous objects. वो objects जिनकी अपनी रोशनी होती है इसे हम luminous object कहते हैं. The objects which do not emit light are called non-luminous objects. वो objects जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती इन्हें हम non-luminous object कहते हैं. Interesting information. Fireflies and a few sea fish emit light due to some chemicals. Fish ऐसी होती हैं जिनके पास naturally light होती है and these are the luminous object. Activity 6.2. Tick the non-luminous object from the objects given below. The objects which do not emit light are called non-luminous objects. Chair, human body, book page, these are the non-luminous objects. Interesting information.
The light from the sun reached the earth after 8 minutes, where the light reflected from the moon reached us in 1.5 seconds. Dear students, now we discuss about transparent, opaque and translucent objects. There are many types of non-luminous objects. Activity 6.3. Through this activity, we know about the different types of non-luminous objects: transparent object, opaque object and translucent object. Activity 6.3. Place a glass full of water on the table in a dark room. Throw torch light on its one side as shown in the figure. Observe the other side of the glass. Has all the light passed through the water? Can you see clearly across the glass containing water? स्टूडेंट सबसे पहले हमने एक ग्लास लेना है, उस ग्लास को हमने वाटर के साथ फिल करना है और इसे हमने एक डार्क रूम में रखना है। डार्क मतलब अंधेरे अंधेरे कमरे में रखना है। फिर हमने इसमें से टॉर्च का यूज़ करना है, टॉर्च को इसमें से गुजारना है, इसकी लाइट यहाँ से क्या पास होगी। अगर ये कम्प्लीटली पास, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि लाइट जो है ग्लास में से कम्प्लीटली पास हो रही है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। Activity 6.3. Now fill the glass with milk. Repeat step 1. What is your observation now? Has all the light passes through the glass containing milk? स्टूडेंट्स, अब हमने एक ग्लास लेना है और उसमें हमने मिल्क ऐड करना है। जब उसको हमने मिल्क के साथ फिल किया है तो फिल करने के बाद हमने इसे भी अंधेरे कमरे में रखना है और अंधेरे कमरे में रखने के बाद हमने टॉर्च लाइट है इसमें से गुजारनी है। हम देखेंगे कि इसमें से कुछ लाइट जो है वो इसमें से गुजरती है। सम लाइट passes through the milk. This is the experiment of translucent object. Now throw torch light on one side of a cardboard or a book. Does it allow light to pass through? Can you see across the cardboard? यहाँ पर एक बुक, यहाँ पर कार्डबोर्ड रखना है इस अंधेरे कमरे में और हमने टॉर्च की लाइट इसमें से गुजारनी है। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि यहाँ से लाइट जो है वो इस कार्डबोर्ड या इस बुक में से पास नहीं हो रही। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ opaque object. The object through which light can pass completely are called transparent object. वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजरती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। वी कैन सी क्लियरली अक्रॉस है, हम उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट कम गुजरती है इन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दैम, हम उसके आर पार आसानी से नहीं देख सकते। We can see only a faint image of the object. The objects which do not allow light to pass through them are opaque objects. वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती इन्हें हम opaque objects कहते हैं। We cannot see across them, हम उसके आर पार नहीं देख सकते। Activity 6.4. Identify the transparent, translucent and opaque objects from the given photographs. यहाँ पे मुख्तलिफ फोटोग्राफ्स दी गई हैं, इनको हमने देखना कि क्या ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ओपैक है, या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है। The first is glasses. Glasses is the example of transparent object. Door opaque, window pane transparent, net curtain translucent, magnifying glass translucent, brick wall opaque. स्टूडेंट, इसी तरह आपने अपनी रिमेनिंग एक्टिविटी को अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अपनी बुक पर सॉल्व करना है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन: द सेलर्स यूज्ड लाइट सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन बिफोर द इन्वेंशंस ऑफ टेलीफोन और रेडियो। के पहले जो सेलर्स थे वो कम्युनिकेट करने के लिए लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते थे बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन और रेडियो और टेलीफोन के इन्वेंशन से पहले सेलर्स लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। Through this experiment, we know about the light travels in a straight line.
टेक 3 आइडेंटिकल हार्ड पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड। आपने 3 जो है वो हार्ड पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेने हैं। मेक होल्स इन ऑल ऑफ देम एट द सेम पोजीशन। तीनों कार्डबोर्ड्स पर सेम पोजीशन में होल मेक करने हैं। प्लेस देम वर्टिकली ऑन द टेबल एज शोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इन तमाम कार्डबोर्ड को आपने वर्टिकली टेबल पर रख देना है। Place a lighted candle on the outside of the first cardboard. फर्स्ट कार्डबोर्ड के बाहरी वाली साइड पर आपने एक कैंडल रखनी है। एडजस्ट देयर पोजीशन, इसकी पोजीशन को इनके होल्स के मुताबिक एडजस्ट करना है। द कैंडल विल बी विजिबल ओनली व्हेन ऑल द होल्स एंड कैंडल फ्लेम आर इन वन स्ट्रेट लाइन। इस साइड से हम देखेंगे कि जो हमारी लाइट है हमें नजर आ रही है। यहाँ कार्डबोर्ड के होल्स में से हम देखेंगे कि हमें यहाँ से फ्लेम ऑफ कैंडल नजर आएगी। सो हम कह सकते हैं द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। Can you see the candle flame from the hole of the last card? Yes, we can see. Students, through this activity, we observe that light travels in a straight line. The next topic is formation of shadows. Shadow means साया कि साया कैसे बनता है। Have you ever thought what happens when a non-transparent object comes in the path of light? कि एक लाइट के गुजरने की जो जगह है उसके दरमियान में अगर कोई भी नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगा। Through this activity, we observe the formation of shadows. Place a torch or candle on a table near a wall in a room. हमने या तो टॉर्च लेनी है या फिर एक कैंडल और उसे हमने टेबल पर रखना है और इस टेबल को हमने दीवार के किसी भी रूम की दीवार के करीब रखना है। Place your hand in between the wall and light coming out from the candle or torch as shown in the figure. फिर हमने इस वॉल और इस कैंडल के दरमियान में अपने हैंड को रखना है और हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इससे शैडो बन रहा है। What do you see on the wall? हम वॉल पर सेम एज अपनी हैंड के मुताबिक ही वहाँ पर शैडो देख रहे हैं। Bring your hand near the candle. अब आपने अपने हैंड को कैंडल के नज़दीक लेकर आना है, उसके करीब करना है। Is there any change in the size of the shadow? अब हम देखते हैं कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट हमारा लाइट यानी कि कैंडल के करीब है तो इससे शैडो हमारा बड़ा बनेगा। Place your hand away from the candle. अब अपने हाथ को हमने कैंडल से थोड़ा सा दूर लेकर जाना है। एंड ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द वॉल। और अब हम शैडो को ऑब्जर्व कर रहे हैं वॉल पर कि इस वक्त जो है वो स्मॉलर इमेज बन रहा है। इसमें सेम इमेज है, इसमें बिगर इमेज है और इसमें स्मॉलर इमेज है। स्टूडेंट्स, व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। तो जब भी लाइट के रास्ते पर कोई नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आता है जिसकी वजह से रोशनी उसमें से नहीं गुजर सकती, तो रोशनी ना गुजरने की वजह से शैडो बनता है। शैडो इज सिमिलर इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज मेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं कि वो सोर्स ऑफ लाइट का ऑपोजिट साइड पर बनता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नियर टू द सोर्स ऑफ लाइट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के करीब होता है, इट्स शैडो इज बिगर, तो इसका साया बड़ा बनता है। When an object is at greater distance from the source of light, जब कोई ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से दूर होता है, its shadow becomes smaller, तो इसका शैडो जो है वो छोटा बनता है। Students, the next topic is reflection of light. The bouncing back of light from a non-transparent surface is called reflection. कि लाइट का किसी भी नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस से टकराकर वापस आ जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। थ्रू दिस एक्टिविटी वी नो अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्टिविटी 6.3, थ्रू टॉर्च लाइट ऑन अ मिरर और शाइनिंग स्टील प्लेट इन अ डार्क रूम एज शोन इन द फिगर।
या तो आपने मिरर का यूज करना है या फिर किसी स्टील प्लेट का यूज करना है, शाइनिंग स्टील प्लेट। ऑब्जर्व द लाइट फॉलिंग ऑन द नियर बाय वॉल आफ्टर बंचिंग ऑफ फ्रॉम द मिरर। ऑफ लाइट कैसे हो रही है, या इन दोनों के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है। इज द लाइट फॉलिंग ऑन द वॉल सेम इन बोथ केसेस, कि इन दोनों केसेस में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। यू मस्ट हैव सीन दैट मोर लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ शाइनिंग सर्फेस। जो स्मूथ शाइनिंग सर्फेस है इसमें ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है देन आर डल सर्फेस। डल सर्फेस में लाइट कम रिफ्लेक्ट हो रही है और जो शाइनिंग सर्फेस है उसमें लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। Dear students, the discussion of chapter 6, part 1 are completed. Now we discuss the activities and question answer. Activity number 1, tick the correct answer. How does light travel in air? Along a straight line. Which object reflects maximum light? Mirror. Speed of sound is maximum in a metal wire. Which of the following sound is called noise? Pressure horn. When water comes in the way of sound traveling through air, sound will become fast. Chapter number 6, fill in the blanks. The speed of sound is in iron is dash meter per second, 5000 meter per second. Fireflies emit light due to dash reaction, chemical. Noise is dash for human health, harmful. Light travels in a dash line, straight. A vibrating object produces dash sound. Students, the next activity is write T for true and F for false statement. The light from the sun reached the earth in 8 minutes. True. Sound cannot pass through solid objects. False. There are no particles in space. True. Door is the example of opaque object. True. Sounds travel faster through solid objects than the air. True. The next activity is match column A with column B. Column A, column B. Luminous object, firefly. No luminous object, chair. Unpleasant sound, horns. Transparent object, glasses. Opaque object, brick wall. Write short answers. What is the transparent object? Write the name of three transparent objects. The objects through which light can pass completely are called transparent objects. वो ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट मुकम्मल तौर पर गुजर सकती है उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, ग्लासेस एंड वाटर। Question number 2. When is your shadow the shortest and the longest in the sunlight? कि सूरज की रोशनी में आपका साया कब बड़ा बनता है और कब छोटा बनता है। In morning and evening the shadow are longest. Morning और evening में हमारा shadow बड़ा होता है। While in noon, जबकि noon में our shadow is shortest, हमारे shadow छोटा बनता है। Dear students, the discussion of chapter 6, part 1 are completed. Read this lesson carefully and do the practice of filling the blanks, true, false column and short questions. We will discuss the remaining lesson and activities in part 2 of chapter 6. Take care and Allah Hafiz.